Hello friends, this is Sarika Tripathi and welcome to Utkarsh Law Classes. दोस्तों एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए और वो गुड न्यूज़ क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन इशू किया जारी किया है और वो क्या है कि वैकेंसी आ गई है. ठीक. और जो मेरे प्यारे दोस्त दिल्ली जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन को देना चाहते हैं, उसमें सर्विस में जाना चाहते हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि पब्लिक अपॉइंटमेंट फॉर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली न्यू दिल्ली दिल्ली जुडिशल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट आपके सामने है. और इस वेबसाइट पे तो यू शुड गो ऑन दिस वेबसाइट है www.delhihighcourt.nic.in यानी निक इन. ठीक, इस पर आप विजिट ज़रूर करिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से कलेक्ट हो जाएगी. तो फॉर्म फिल करने के पहले वेबसाइट को ज़रूर देखना चाहिए, साइट पे ज़रूर जाना चाहिए जैसा आप जाते भी होंगे. तो दोस्तों एज पर द दिल्ली जुडिशल सर्विस रूल्स 1970 एज अमेंडेड अप टू 11/2/22. तो फिलहाल आपको इससे क्या मेन आपको साइट देखनी है और आपको देखना है दोस्तों की वैकेंसी कितनी है. तो ध्यान से देखें. High Court of Delhi invites online application for eligible candidates for filling up 123 vacancies. कितनी वैकेंसी है दोस्तों? 123 वैकेंसीज. 55 एग्जिस्टिंग है और 68 है एंटिसिपेटेड. ध्यान से देखेंगे सभी. 55 एग्जिस्टिंग एंड 68 एंटिसिपेटेड. टोटल वैकेंसी है 123. ध्यान से रखिएगा. In Delhi Judicial Service by holding Delhi Judicial Service examination in 2 successive stages. First is Delhi Judicial Service preliminary examination. Point should be noted that there is a negative marking system. So 25% negative marking. Examination objective type. Preliminary examination nature is objective type with 25% negative marking. ये बहुत ध्यान से देखेंगे. ठीक है. 25% for selection for the mains examination written. मेन एग्जामिनेशन रिटर्न में जैसे हमेशा होता रहा है और प्री एग्जामिनेशन आपका कैसे होना है? प्री एग्जामिनेशन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप इन विच 25% है इसमें नेगेटिव मार्किंग. फ्रेंड्स, क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी आवाज़ ठीक है. तो ये फिलहाल वैकेंसी के लिए एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के लिए आपको जानकारी देना मेरा पर्पस है. सेकेंड इज दिल्ली जुडिशियल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन रिटन फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर कॉलिंग फॉर वाइवा वॉइस, जिससे कि आप क्या बोलते हो? इंटरव्यू भी बोलते हैं, है ना? इंटरव्यू, राइट. तो जो क्वालिफाई करेगा प्री वो देगा मेन और फिर वही देगा इंटरव्यू. आइए आगे चलते हैं. द दिल्ली जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप ओके एंड रेफर टू अबव विल बी हेल्ड ऑन संडे. डेट नोट करके रख लें कहीं पर. संडे को है द 27th March 2022. टाइमिंग इज 11 AM to 1:30 PM. ये आपकी टाइमिंग है. ठीक है. 27th March 27 मार्च से. द स्केल ऑफ द पे ऑफ मेंबर्स ऑफ दिल्ली जुडिशियल सर्विस. तो स्केल वगैरह से अभी फिलहाल आपको कुछ नहीं लेना देना है. आप आगे चलें. अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन इफ ही इज. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ है. ध्यान से देखें क्या क्या एलिजिबिलिटी है. सो अ सिटीजन ऑफ इंडिया. फर्स्ट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकेंड इज अ पर्सन प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट. Practicing as an advocate in India or a person qualified to be admitted as an advocate under the Advocates Act 1961 and not more than 32 years. So age limit is what? 32 years of age on 1st January, first day of January. यानी आप 1 जनवरी तक 32 साल से 32 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. सो 32 ईयर्स ऑफ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी ऑफ द ईयर इन विच द एप्लीकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट आर इनवाइटेड. दैट इज 1/1/2022. तो ये इन्विटेशन डेट है जिस दिन आपको बोला जा रहा है. ओके तो इस दिन आपकी एज 32 या इससे कम हो तो आप इसे फिल कर सकते हैं. इससे अधिक नहीं होनी चाहिए. सो ध्यान दें. फर्स्ट ये जो एलिजिबिलिटीज़ है आपने इनको ध्यान से देखा. In the case of candidates belonging to scheduled caste और या scheduled tribes, SC और ST के लिए, scheduled tribes के लिए देखिए क्या वेटेज है यहाँ. The upper age limit is, यहाँ पर age limit में देखिए रिलैक्सेशन है. रिलैक्सेबल बाय 5 years
फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे, SC/ST वालों के लिए एज में 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, छूट है. द अपर एज लिमिट इज ऑल्सो रिलैक्सेबल मैक्सिमम बाय 5 ईयर्स इन द केस ऑफ एक्स सर्विस मैन. ध्यान से देखिए, इन्हें भी मिली हुई है 5 साल की छूट, इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स who have rendered at least 5 years military service and have been released on completion of assignment, including those whose assignment is due to be completed within 6 months. Otherwise, then by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of physical disability attributable to military service or on invalidment. आइए आगे देखें, जो मेन है आपके लिए, द अपर एज लिमिट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज. देखिए इनके लिए भी क्या है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज, ओके, आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज शैल बी रिलैक्सेबल बाय 10 ईयर्स. अगर आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटी है तो आपको 10 ईयर्स का क्या मिल रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है. जनरल कैटेगरी PWD identified disability candidates would thus be eligible for age relaxation up to 10 years. SC/ST category PWD identified disabilities candidates would thus be eligible for age relaxation up to 15 years. तो जो PWD में आ रहे हैं और identified disabilities है, अगर वो जनरल कैंडिडेट्स हैं तो उनको 10 years का रिलैक्सेशन मिल रहा है, और बाकी जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं जिनको ये जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं उनको ये दोस्तों 15 years का. The candidates shall submit their applications online only in the prescribed format. ध्यान से देखिए, application online only in the prescribed format through the official website of High Court of Delhi, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई है, that is www.delhihighcourt.nic.in as per schedule of dates given below. डेट बहुत ध्यान से कहीं भी अपने रूम में आप एफिक्स करके रखेंगे. कई बार क्या होता है, डाल देंगे फॉर्म, फिल कर देंगे और ऐसी स्थिति में डेट निकल जाती है, फिर आप लोग बार बार परेशान होते हैं. ठीक है, सो डेट है आपकी, डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू लॉग एंड फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 28/2/2022, यानी कि 28 फरवरी 2022 10 बजे सुबह से. दोस्तों ये डेट याद करके रखेंगे. एंड आफ्टर दैट लास्ट डेट क्या है ये भी देखना है आपको. ये थी कमेंसमेंट की, इस दिन शुरुआत हो रही है. एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एंड और मेकिंग पेमेंट, राइट, पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग. ध्यान से देखें, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग 20th March 2022 10 PM. टाइमिंग देखें, PM है, 10 बजे रात तक कर सकते हैं. ओके, आइए दोस्तों आगे देखें. द फीस नॉन रिफंडेबल, वापस नहीं होगी भाई, ध्यान से देख लो. एंड द सम ऑफ ₹1000 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, जो जनरल कैटेगरी 1000 एंड 200 फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. Persons with disabilities, identified disabilities, candidates should be paid through debit card, internet banking. The candidates can take printout of application application form and keep it for future reference. ध्यान से देखेंगे इस बात को. They should not send the printout of the online application form to the High Court of Delhi. So the category wise breakup of vacancies to be filled is as under. Number of vacancies, category general category में existing 24, anticipated vacancy is 62. Anticipated vacancies are 62, existings are 24, total vacancies 86 for general candidates. SC category, general category, total seats 86. Schedule caste, existings vacancies are 3 and anticipated vacancies are 5. Total vacancies are 8. Scheduled tribes, for category of scheduled tribes, existing vacancies are 28. Anticipated vacancy is only 1 and total vacancy is 29. Total
existing is 55, anticipated are 68. तो 55 एंड 68 और टोटल 123 जो आप जानते हैं। तो फिलहाल आइए आगे देखा जाए। ये तो आपने वैकेंसी जानी, वैकेंसी पर ठीक है, जानकारी होनी चाहिए कि कितनी है। टोटल 123 है। जनरल वाले देख लेंगे कि हमारे लिए 55 है और जो है टोटल मिलाकर 55 है। 123 ऐसे हमें मिली हुई है। तो ये आप देखेंगे कि जो भी कैटेगरीज में आ रहा है, जैसे जनरली आप ये एग्जिस्टिंग में देखें 24, 62, तो जनरल के लिए आपकी कितनी हुई, 86 हुई, ठीक है। और एससी के लिए टोटल 8 हो गई और एसटी के लिए टोटल 29 हो गई। वहां से देखिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। नोट 1 आउट ऑफ द aforesaid 123 वैकेंसीज द रिजर्वेशन फॉर PWD कैंडिडेट शैल बी एज फॉलोज। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ओके। कैटेगरी वैकेंसीज PWD ब्लाइंड एंड लो विजन, ठीक, हु आर ब्लाइंड एंड लो विजन, तो इनकी वैकेंसीज है, देयर आर 4 वैकेंसीज फॉर PWD blind and low vision, and there are 3 vacancy for PWD 1 arm, 1 leg, both legs, leprosy, cured, dwarfism and acid attack victims. And there are 3 vacancy PWD specific learning disability and PWD multiple disabilities involving blindness and low vision, 1 arm, 1 leg, both legs, leprosy, cured, dwarfism and acid attack and specific learning। तो आपने देखा कि ये वैकेंसीज कितनी हैं, 10 वैकेंसीज हैं। किसमें आप देख रहे हैं, PWD कैंडिडेट्स के लिए। द कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ एंटिसिपेटेड vacancies may undergo a change as the same would depend upon the category of the officers of Delhi Judicial Service to be promoted and would be finalized only after the offices are actually. जो आपके लिए ध्यान देने की बात है, yes, no, number of वैकेंसीज इज सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज हो सकती हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। आपको मैंने पहले ही इसकी साइट बता दी है। सिलेबस जो कि देखना चाहिए आपको, you should know what is the syllabus and scheme for conduct of the examination. Delhi Judicial Service examination will be held in 2 successive stages. First is Delhi Judicial Service preliminary examination, objective type with 25% negative marking, okay, negative marking for selection for the main examination with written examination. Second is Delhi Judicial Service mains examination written for selection of candidates for calling for viva voice or interview. Preliminary examination will be a screening test of qualifying nature and will consist of one paper of multiple choice questions carrying maximum of 200 marks. Pre-examination 200 marks का है, ध्यान देंगे, and the preliminary examination questions on general legal knowledge and aptitude of the candidate's power of expression. Flair in English, knowledge of objective type legal problems and their solutions covering the Constitution of India, the Code of Civil Procedure 1908 yani CPC, the Code of Criminal Procedure Code CRPC, IPC Indian Penal Code, Indian Contract Act, Indian Limited Liability Partnership Act 2008, the Arbitration and Conciliation Act 1996, the Limitation Act, the Indian Evidence Act, the Specific Relief Act, the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 and the Commercial Courts Act 2015 will be included. ये आपने देखा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस को कि क्या आने वाला है, ठीक है। फ्लेयर इंग्लिश, नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप लीगल प्रॉब्लम्स। Point number 2, minimum qualifying marks in the preliminary examination shall be 60%. Point should be noted that minimum qualifying marks in the preliminary examination shall be 60%.
for general category and 55% for reserved categories, that is scheduled caste, scheduled tribes and eligible categories of persons with disabilities as specified for this service. However, the number of candidates to be admitted to the main examination written will not be more than 10 times. Okay, main examination admitted to the main examination will not be more than 10 times the total number of vacancies. The total number of vacancies of each category advertise. Each category advertise 10%. Provided that in case of candidates secures marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for main examination written, then all such candidates who have secured marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for mains examination written shall also be shortlisted for the mains examination written, irrespective of the fact that by including such candidate or candidates, the number of candidates shortlisted for mains examination written exceeds the prescribed limit of 10 times the number of vacancies in each category advertised. The marks obtained in the preliminary examination by the candidates who are declared qualified for admission to the main examination will not be counted, okay, will not be counted to determining their final order of merit. Main examination written in form of written. The main examination written will include the following subjects, each subject to carry the number of marks shown against it. General legal knowledge and language, 250 marks. Civil law 1, paper 1, 200 marks. Civil law paper 2, 200 marks. And criminal law 200 marks. ध्यान से देखेंगे आप सभी. जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज 250 मार्क्स, सिविल लॉ 1 200, सिविल लॉ 2 200 एंड क्रिमिनल लॉ 200. So, their syllabus. General legal knowledge and language. This paper shall comprise of 2 sections. Syllabus subjects are here. This paper shall comprise of 2 sections. Section 1, general legal knowledge. This is to test the candidate's knowledge of current legal affairs, etc. 100 marks. General legal knowledge. Section 2, language, essay, translation and press writing. This is to test the candidate's knowledge and power of expression in English. Credit will be given both of substance and expression. Conversely, deduction will be made for bad expression, faults of grammar and misuse of words, etc. There will be 2 passages for translation. There will be 2 passages for translations, one in English which will be required to be translated into Hindi in Devanagari script, and the second passage in Hindi in Devanagari script shall be required to be translated into English. How many marks? 150 marks. Second is civil law first paper. The Indian Contract Act 1872, the Sale of Goods Act 1930, the Transfer of Property Act 1882, the Specific Relief Act 1963, Hindu Law, Mohammedan Law, the Delhi Rent Control Act, the New Delhi Municipal Council Act, the Delhi Municipal Corporation Act 1957 and the Commercial Courts Act 2015. So, Indian Contract Act, Sale of Goods Act, Transfer of Property Act, a Specific Relief Act, Hindu Law, Mohammedan Law, Delhi Rent Control, Law of Torts, New Delhi Municipal Council Act, the Delhi Municipal Corporation Act 1957 and the Commercial Courts Act 2015. Up to 200 marks, okay, 200 marks. Civil law second, the Code of Civil Procedure 1908, the Indian Evidence Act 1872, the Limitation Act, the Registration Act, the Arbitration Act, Arbitration and Conciliation Act, the Trademarks Act and the Copyright Act.
for 200 marks. Criminal law, fourth is criminal law. The Code of Criminal Procedure 1973, the IPC Indian Penal Code, the Indian Evidence Act, the Protection of Women from Domestic Violence Act, the Negotiable Instrument Act, the Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, and the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. Or 200 marks. Viva voice, it means interview. Viva voice will carry 150 marks. Okay, 150 marks. Candidates of general category must secure minimum 40% marks in each written paper. Minimum 40% marks in each written paper, general category, okay, must secure, and 50% marks in the aggregate, and 50% marks in aggregate, and candidates of reserved category, okay, SC ST, and eligible categories of persons with disabilities as specified for this service must secure minimum 35% marks in each written paper and 45% marks in the aggregate. In main examination, written to be eligible for being called for viva voice. Clear? So, आपने ये सारा एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन मेरे साथ साथ अभी के अभी पढ़ लिया. तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो वैकेंसी निकाली है, जैसा कि आपने अभी अभी देखा है ना, तो इसके लिए जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तमाम स्टेट के एग्जामिनेशन देते हैं या उन्हें दिल्ली का ही एग्जामिनेशन देना है, जैसी भी बात है, तो वो ये ध्यान से देख लें कि वैकेंसी टोटल 123 है, जिसमें कि जनरल के लिए 55 है और 55 एग्जिस्टिंग है और 68 एंटीसिपेटेड है, राइट. तो ये आप देख लें और कैटेगरी भी अपनी देखते हुए फीस, डेट सब ध्यान से देख लेंगे और वेबसाइट को अच्छे से देखेंगे. दोस्तों, एक बार लास्ट में मैं आपको डेट ज़रूर ध्यान दिलाना चाहूँगी कि डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू लॉगिन एंड फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 28 फरवरी 2022, यानी 28 फरवरी 2022 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से. और दोस्तों, लास्ट डेट और टाइम है ऑनलाइन एप्लीकेशन का और फॉर्म का एंड मेकिंग पेमेंट, ये है आपका 20 मार्च 2022, यानी कि 20 मार्च 2022 रात में 10 बजे तक आप ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान से आपने देख लिया और एक बार आप इसकी साइट को भी देख लेंगे. वैसे तो आप इसको सर्च कर ही लेते हैं. ओके, तो इस पर आप विजिट ज़रूर करें. ठीक है, www.delhihighcourt.nic.in. तो इस पर आप विजिट करें और अगर आपकी प्रिपरेशन है ऐसी और नहीं है तो प्रिपरेशन को अपनी ऐसी बनाइए और फॉर्म फिल कीजिए, एग्जाम दीजिए. इन्हीं गुड विशेस के साथ मुझे परमिशन दीजिए. थैंक यू सो मच.